Sure. So, good evening, everyone, and thank you, Karthikeyan ji, for the kind words. My name is Adnan, as you already know, and I'll be sharing with you the walkthrough of the solution. And for everyone's reference, and I've been requested by the members that I should be doing dual language. तो सभा में उपस्थित सभी सदस्यों को नमस्कार और मेरा नाम अदनान है और अब मैं अपना स्क्रीन शेयर करूंगा और आपको मेरा स्क्रीन दिखाई देगा और थोड़ा बैंडविड्थ कंजर्व करने के लिए मैं अपना कैमरा बंद कर देता हूं ताकि आपको जो मैं प्रेजेंटेशन दिखाना चाह रहा हूं, जो लाइव डेमो देना चाह रहा हूं, वो अच्छे से दिखे. So I'll be turning off my cameras to conserve the bandwidth so that you can see the demo in a better way. I'll just start sharing my screen. I think I'll need to be allowed to share my screen. Can you please allow me? Pranay, can you help Adnan to share? It is there. Oh, it's there? Okay. But I can. 1 second. Yes, multiple participants can share simultaneously. Is it happening? Yes, let me try do that. The screen has come. Yeah. Yeah. Hope you can see my screen. आशा करता हूँ. Yes, we can. दिख रहा हो. मुझे शायद बीच में जब मैं ट्रांजिशन करूं तो मुझे एक बार टर्न ऑन करना पड़ेगा. आई कांट गो अक्रॉस विंडोज. तो मैं आपको अलग अलग विंडोज में अलग अलग चीजें दिखाऊंगा. तो अभी आपको अपने स्क्रीन पर एक डेमो स्टोर हम लोगों ने बनाया हुआ है डेमोन्स्ट्रेशन के लिए. तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि कल को जब आपकी अपनी दुकान बनेगी यानी आपका अपना स्टोर बनेगा तो कैसा लगेगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल शो यू ए डेमो स्टोर दैट वी हैव क्रिएटेड जस्ट टू शो यू हाउ द डेमो स्टोर विल वर्क and look and how will your customer when they come to your store, how they will go through your catalog and they'll be able to order you. So we'll go through that process briefly and then we'll move to how the store creation process work. And as the FAIITA leadership had been telling you that the store creation process is very smooth and within 10 to 15 minutes you'll be able to create your store. So how that actually happens, I'll create a live store in front of you and I'll show you the process. तो इसके बाद पहले तो मैं आपको दिखाऊंगा कि ये स्टोर जो है आपका यानी आपकी जो ऑनलाइन दुकान है इसके ऊपर आपके ग्राहक आएंगे तो वो कैसे देखेंगे, कैसे आपके कैटलॉग में से अलग अलग उत्पादों को देखेंगे और उनको जो उत्पाद चाहिए वो कैसे ऑर्डर कर पाएंगे. उसके बाद हम लोग जो स्टोर क्रिएशन का प्रोसेस यानी स्टोर कैसे बनेगा उसके बारे में जैसे FAIITA लीडरशिप ने आपको अभी बताया कि बहुत ही सरल तरीका है और 10 से 15 मिनट में आप बहुत आसानी से अपनी दुकान बना पाएंगे. तो उसके बारे में समझेंगे हम. तो अभी आपको मेरे स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है ये डेमो स्टोर है. तो यहाँ पर जितनी ऊपर कैटेगरीज हैं यानी जितनी भी तरह के उत्पाद आप रखते हैं वो सारे आपको यहाँ पर दिखाई देंगे. सो ऑन द टॉप ऑफ योर स्क्रीन यू आर सीइंग द डिफरेंट कैटेगरीज. सो लाइक प्रोडक्ट्स, लैपटॉप्स एंड देन यू आर शोइंग डिफरेंट प्रोडक्ट्स. तो यहाँ ऊपर आपको प्रोडक्ट्स दिखाई दे रहे हैं यानी उत्पाद दिखाई दे रहे हैं और फिर उसके अंदर लैपटॉप में कौन सी ब्रांड्स है, मॉनिटर्स में कौन सी ब्रांड है, इस तरह से आप दिखा पाएंगे. और उसके अलावा और जो अलग अलग प्रकार के आप उत्पाद वो आप यहाँ दिखा पाएंगे. So first you'll be seeing this navigation wherein we have added products and laptops and then you can see different brands and then you are seeing the other categories that you also seen in. So like you have printers and you can define printers and by the type of printer. So laser printer, inkjet printer, dot matrix. So all that gaming products if you want to highlight you can do that. So all the solutions are here including softwares and on the home page you have interchangeable banners so they keep changing after a few seconds and underneath that you have different banners which you can utilize to showcase if you are running certain schemes or promotion. तो उसके नीचे आपको यहाँ पर होगा मेन बैनर जिसके ऊपर आप Adnan sir, can you just hold on for a second? May I request everybody to please mute? May I request everybody to please mute themselves? Thank you. Yes, sir. Adnan sir, sorry. Not a problem.
तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा था कि सबसे ऊपर आपको ये दिखाई देंगे मेन बैनर, जो कि कुछ कुछ सेकंड में बदलते रहते हैं। आप इनको भी लिंक कर सकते हैं, तो जैसे आप कोई प्रमोशन रख रहे हैं या किसी ब्रांड की स्कीम चल रही, तो उसको आप यहाँ पर दिखा सकते हैं, और जैसे ही ग्राहक आपकी ऑनलाइन दुकान खोलेगा उनको ये सामने नजर आएगा और वो सीधा जाकर उसको देख पाएंगे और उसको खरीदना चाहेंगे तो खरीद पाएंगे। और उसके अलावा आपको अगर दिखाना है कि इस प्रकार के हम उत्पाद रखते हैं तो वो भी कर सकते हैं। जैसे अभी ये जो बैनर हम लोगों ने डेमो स्टोर पर डाले हुए हैं, इसके अंदर हम लोगों ने अलग अलग प्रकार के उत्पाद जो इस दुकान पर हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स जो हैं, उनको हम लोगों ने यहाँ दिखाया हुआ। किसी में मॉनिटर है, किसी में स्पीकर्स हैं, तो वो सारी हमने बताई हुई है। उसके बाद नीचे छोटे बैनर हैं। So the main banner, as I was explaining, so these are interchangeable banners, so they'll keep changing after a few seconds. But in terms of usability, if there is any scheme or promotion that is happening and the brand is offering some promotion or you are doing it, you can showcase it here. And the moment customer opens your store, this is the very first thing they'll come across, and they can immediately go and buy the product and avail the offer, or they can just scroll down. So at the moment on the screen, what you are seeing are different product wise banner that we have created. So one banner is for accessories, other banner is for monitors, etc. And underneath that there are few more banners. तो उसके नीचे आपको और बैनर दिखेंगे। उसके बाद है ट्रेंडिंग प्रोडक्ट का सेक्शन। इसका ट्रेंडिंग नाम है, आप इसका नाम बदल सकते हैं, परंतु इसके अंदर आप दिखा सकते हैं कुछ भी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, ऐसे उत्पाद हैं जो कि नए आए हैं, लेटेस्ट लॉन्च हैं, तो उनको आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। So underneath the banner section, you have trending products. Now we have just kept the name trending. You can rename it as per requirement, what you are seeing on your screen. And in this section you can showcase the latest collection or the latest launches onto your store, so that whenever a customer is coming and they are looking for in your product space, a lot of people are inquiring and looking for the latest launches. So obviously you can showcase them upfront, and the moment they open your online store, they are seeing the products and they can right away purchase them. Underneath that, we also have another set of banners, which again can be utilized to promote certain scheme or promotions, or to navigate or help customers reach different categories. अब इसके नीचे जो ट्रेंडिंग सेक्शन है, जहां से हम लोग जो नए लॉन्च हैं, नए उत्पाद आए हैं हमारे पास, उनको दिखा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नीचे और बैनर की सुविधा है, तो ये भी हम इनका उपयोग कर सकते हैं। या तो कोई प्रमोशन हम कर रहे हैं जहां पर हमें प्रोत्साहित करना है ग्राहकों को कि वो किसी प्रमोशन में भाग लें या उत्पाद खरीदें, तो वो दिखा सकते हैं। या फिर हम सीधा सीधा किसी उत्पाद को यहाँ पर दिखा सकते हैं जिसके अंदर वो जाना चाहें। जैसे अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर मॉनिटर्स का दिया हुआ है HP के, तो यहाँ से हम सीधा जाकर उन प्रोडक्ट्स को खोल सकते हैं, उन उत्पाद परचेज कर सकते हैं। So like you are seeing currently on your screen, you can, at the moment we are showcasing HP monitor, gaming pavilion and PC. So if I click on it, I'll be able to open and buy these products. And underneath that, we again have a section similar to what you have seen up top, like trending. तो यहाँ पर एक और इसी तरह का सेक्शन है जैसे हम लोगों ने ट्रेंडिंग वाला यहाँ पर देखा था। अब यहाँ पर फर्क ये है कि आप इसको इस तरह से कर लीजिए, लेटेस्ट अराइवल कर लीजिए, और ये बेस्ट सेलर, यानी आप जानते हैं जो उत्पाद बहुत अच्छे बिकते हैं और बहुत जल्दी बिकते हैं, तो वो हॉट सेलिंग प्रोडक्ट्स को आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। सो in the featured section, you can showcase hot selling products which are moving really fast, and you would want to showcase them to your customers who are opening your store. Now, it is not necessary that you rename them as featured, and this is in the current theme that we are using, and the number of these sections also vary theme-wise. तो ये अभी हमें जैसे इस थीम में 2 ही सेक्शन दिख रहे हैं, ट्रेंडिंग है, दूसरा फीचर्ड है। अब ये भी इस थीम का आप उपयोग कर रहे हैं उस पर निर्भर करता है। कुछ थीम में इससे ज्यादा है, उसमें डील ऑफ द डे, बेस्ट सेलर, न्यू अराइवल, हॉट डील, 4-5 सेक्शन है। तो आप अपनी आवश्यकता अनुसार थीम का चयन कर सकते हैं और अनुसार यहाँ पर होम पेज के ऊपर उत्पाद दिखा सकते हैं। उसके बाद यहाँ फुटर में है जहाँ पर आप अपना पता, अपना डिटेल डाल सकते हैं। उसके बाद व्हाट्सएप से अगर आपको इसको इंटीग्रेट करना है वो भी कर सकते हैं। और यहाँ पर आप अपनी अबाउट अस का वो पेज बना सकते हैं, उसके बारे में, अपने व्यापार के बारे में, अपने बारे में जानकारी दे सकते हैं। और उसके बाद एक बल्क बाइंग के लिए भी आप चाहें तो यहाँ पर फॉर्म बना के उसे जोड़ सकते हैं। यानी अगर कोई बड़ा बल्क ऑर्डर करना चाह रहा है तो वो यहाँ से आपसे जानकारी ले सकता है, या फिर कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करके वो आपसे मैसेज भेज सकते हैं, या फिर आपका फोन नंबर तो है ही, उस पर कॉल कर सकते हैं।
So in the footer, you have your address and details, and you should have a about us page so that whosoever is coming to your online store can read about your business. And obviously all the brick and mortar stores, they have so much credibility. It is just that you have to bring it upfront and showcase it to your customer. So speaking it very clearly and very simply, that in your physical store, because you have a store and you are there, so obviously customers have that credibility. When we are talking about the online space, so obviously people are cautious, and because you already have an online presence and customer can read, okay, there is a physical shop just near me, so obviously they have that element of credibility. But also ensure that you are creating few of the pages like about us or our story. If you have a heritage kind of a story that your store has been there for 15 years or 20-30 years, so try to do that. तो यहाँ पर आप ये जानकारी देंगे, और सभी को सदस्य जो भी ऑनलाइन स्टोर बनाते हैं, मैं सभी को ये आग्रह करता हूं कि अपने बारे में, क्योंकि ऑनलाइन स्पेस में आप खुद नहीं हैं, तो वो जो कंफर्ट होता है ग्राहक को वो नहीं होता, वो हमेशा थोड़ा सस्पिशियस रहता है ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए। तो यहाँ जब आप अपनी दुकान का पता डालना है तो उनको वैसे ही समझ में आ जाता है कि मेरे पास की दुकान है। उसके अलावा अगर आप अबाउट अस वगैरह डालेंगे, अपनी जानकारी डालेंगे, तो और उनको कॉन्फिडेंस आ जाता है ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए। अपना नंबर वगैरह दिखाइए। इसमें हमारे पास एक और सुविधा है कि आप अपना व्हाट्सएप भी दिखा सकते हैं, तो यहाँ व्हाट्सएप का आइकन आ जाएगा और वो सीधे आपसे बात भी कर पाएंगे। सो इन एडिशन टू दिस वी आल्सो हैव अ फीचर दैट you can showcase your WhatsApp here. So it will be shown as an icon and they'll be able to chat directly with you over the WhatsApp. Now this was a brief about the homepage. You can see the WhatsApp icon here. तो आप ये देख सकते हैं WhatsApp का आइकन, अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो WhatsApp चालू हो जाएगा और मैं बात कर पाऊंगा ग्राहक के तौर पर जो दुकानदार हैं उनसे। उसके बाद ईमेल तो है। अब यहाँ पर अगर मैं ग्राहक की तरह आया हूँ, so now here if I'm a customer and I'm looking for a laptop, so I can see I want to buy a HP laptop, so I'll just click on HP. तो मैं अगर एक ग्राहक हूँ उदाहरण के तौर पे और मैं इस दुकान पर आया हूँ और मुझे एक लैपटॉप खरीदना है HP का, तो मैं HP पे क्लिक करूंगा। अब HP की जितने भी लैपटॉप हैं वो मुझे यहाँ पर दिखाई देंगे। So all the laptops that are there on this store will be visible to me, and I can obviously go around and click on the products and do my recce, or I can just if I know the product which I am wanting to buy, I can straight away go and buy that. तो अब जब ये पेज खुल जाएगा तो यहाँ पर मुझे सारे उत्पाद दिखेंगे। अगर मुझे चाहूं तो मैं एक एक को खोल के देख सकता हूं, या फिर अगर मैं चाहूं तो अगर मुझे पहले से पता है कि मुझे कौन सा लैपटॉप खरीदना है तो मैं सीधा जाकर उसको खोल के खरीद सकता हूं। परंतु अगर मैं अभी भी जानकारी इकट्ठा कर रहा हूं और मैं चाहता हूं, मेरे पास ब्रीफ है कि मुझे भाई 8 GB रैम का लैपटॉप चाहिए और जिसके अंदर AMD प्रोसेसर हो, तो मैं यहाँ पर रैम में से 8 GB सेलेक्ट करूंगा और फिर उसके बाद प्रोसेसर में जाकर मैं AMD का चयन कर लूंगा। सो assuming that I am a customer who's looking for a 8 GB RAM laptop and that has a AMD processor, so I'll just go to the RAM section and select RAM filter and select 8 GB, and then I'll go to the processor and select AMD, and I can have the product. So very easily within very few clicks I can narrow down to the ideal product that I'm looking for. तो मैं बहुत ही कम क्लिक के अंदर जो उत्पाद मुझे चाहिए मेरी आवश्यकताओं के अनुसार मैं उसको ढूंढ पाऊंगा। अब ये उत्पाद खुल गया है मेरे सामने मेरे स्क्रीन पर। सो नाउ दिस प्रोडक्ट इज ओपन इन फ्रंट ऑफ मी ऑन माय स्क्रीन, सो आई कैन सी व्हाट द प्रोडक्ट नेम इज, what is the price and what are the specification. तो एक बार ये प्रोडक्ट ये उत्पाद खुल जाएगा तो मुझे यहाँ पर दिखेगा उसका नाम क्या है, क्या उसकी कीमत है और उसकी क्या स्पेसिफिकेशन है। वो सारी डिटेल्स मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, उनको मैं हाईलाइट कर देता हूँ सभी के संदर्भ के लिए, और यहाँ से मैं अलग अलग तस्वीरें भी देख सकता हूँ। उसके अलावा और भी जानकारी डालनी है तो वो भी आप डाल सकते हैं। So in addition to whatever we are displaying here, if there is additional information that you want to showcase for this product, you can do that. And once I have shortlisted the product, एक बार मैंने इस उत्पाद का चयन कर लिया, उसके बाद मैं उसे add to cart कर सकता हूँ। यानी मुझे अगर और भी उत्पाद लेने हैं तो मैं add to cart कर सकता हूँ या फिर मैं buy now कर सकता हूँ। So either I can do an add to cart or I can click on buy now, and I'll land on this page where I'll fill in my details and I'll be able to place order, and I'll have the option to either pay using credit card, debit card, net banking UK, that is digitally I can pay, or I can even do a cash on delivery, but that will depend totally on store owner whether they want to offer cash on delivery or not.
तो एक बार मैंने उत्पाद का चयन कर लिया, उसके बाद मेरे पास ऐड टू कार्ट और बाय नाउ की सुविधा होती है। तो बाय नाउ है कि मैं सीधा जाके खरीद लूं, ऐड टू कार्ट में मैं अभी भी और कुछ उत्पाद देखना चाहता हूं और उन्हें डालना चाहता हूं, तो वो दोनों सुविधाएं हैं। उसके बाद मैं सीधा चेकआउट पे जाऊंगा और जहां से मैं ऑर्डर कर पाऊंगा। अब यहाँ पर मैं चाहूं तो डिजिटल पेमेंट जो प्रणाली है उसके माध्यम से, यानी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई वॉलेट, उसके माध्यम से भी मैं पेमेंट कर सकता हूं, भुगतान कर सकता हूं, या फिर अगर मैं चाहूं तो कैश ऑन डिलीवरी के माध्यम से भी कर सकता हूं। अब कैश ऑन डिलीवरी देना नहीं देना जो है दुकान के जो मालिक हैं उनका निर्णय है। वो अगर चाहे तो दे सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं दे सकते। और उसमें भी आप सीमित कर सकते हैं कि भाई जो मेरे आसपास के क्षेत्र है बस वहीं मुझे कैश ऑन डिलीवरी देनी है और कहीं नहीं देना, तो वो भी मुमकिन है। सो नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कैश ऑन डिलीवरी, सो यू कैन ऑल्सो set a rule that it will be applicable for customers who are living or who are residing in close proximity to your store, and everyone else can pay using the digital payment method. So this was a brief walkthrough of the online store which will be there. तो ये था एक छोटा सा वॉक थ्रू जो हमारा ऑनलाइन स्टोर होगा उसके बारे में, और ये हर दुकान का अपना होगा। यानी अगर उदाहरण के तौर पे मेरी दुकान का नाम होता स्टार कंप्यूटर्स, तो ये मेरा होता starcomputers.linker.store। अब यहाँ पर अगर मैं इसे अपनी डोमेन पर, मेरे पास अपनी डोमेन है starcomputers.com, तो मैं उसके ऊपर भी चालू कर सकता हूँ, या फिर मैं नहीं चाहता उस पर पैसा खर्चना तो मैं starcomputers.linker.store पर भी चालू रख सकता हूँ। So now here, this is my store. So assuming that my business name is Star Computers, so I'll have starcomputers.linker.store. Now, if I have the domain like starcomputers.com, so I can take it live on that domain. Otherwise, if I don't want to invest there, I can continue to use starcomputers.linker.store. So this is business owners. So a lot of time people get confused what this is and how will the customers come. So you'll have to share the URL or the link which is there for your store with your customers, so you can popularize your store and people will know and they'll be able to come to your store and place orders. So the very basic thing that you can do is to, on Google Business Listing, add the business add your store URL. So whenever people are searching on Google, they can see your business and they can go to your online store and they can start ordering. तो बहुत ही बेसिक एक सवाल जो काफी सारे लोग पूछते हैं कि ये दुकान होगी किसकी होगी, तो आपकी दुकान है और उसके बाद हम इसे प्रचार इसका कैसे करेंगे, कैसे ग्राहक आएंगे, तो उसका प्रचार आपको करना होगा। इसका आप यूआरएल जो है उसको सबसे कम एफर्ट वाली चीज है, बहुत ही आसान चीज है कि आपका जो गूगल बिजनेस लिस्टिंग है उसमें इसका यूआरएल डाल लीजिए। जब भी लोग आपको गूगल पे ढूंढेंगे उनको आपकी वेबसाइट मिल जाएगी और वहीं से जाकर वो सारे आपके उत्पाद देख पाएंगे और वहां से आपको ऑर्डर कर पाएंगे। तो ये था किस तरह से आपकी दुकान दिखेगी और किस तरह से ग्राहक उसमें उत्पाद को देख पाएगा और ऑर्डर कर पाएगा, उसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ किस तरह से आप अपनी दुकान बना पाएंगे। So I've just explained to you very briefly how your online store will look, and obviously it will look a lot better than what you are seeing currently on your screen. And how will your customers will come and they'll place orders. So this was a brief walkthrough of the e-store part. Now let's move on to the store creation part and understand how the store creation will work. So I'll have to turn off the screen share and turn it back on because somehow I don't have that capability to switch screens. तो एक क्षण के लिए मैं अपना जो स्क्रीन है वो बंद करूंगा, स्क्रीन शेयर बंद करूंगा और वापस से चालू करूंगा। आशा करता हूं सभी को फिर से मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है। So I hope everyone can see my screen again. So yes sir, yes, yeah, as a process you'll get an invite, and when you click on the invite you'll land on the this kind of a page wherein your details will be pre-populated. All you have to do is to create a password. आपको एक ईमेल आएगी एक्टिवेशन लिंक के साथ, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का पेज खुलेगा जहां पर आपको अपनी जो डिटेल है वो पहले से ही डली हुई आपको दिखाई देंगी। आपका नाम, आपकी ईमेल, वो सारा आपको पहले से डला हुआ, आपको अपना पासवर्ड बनाना है, उसके बाद आगे बढ़ना है। एक बार आगे बढ़ेंगे तो इस प्रकार आपको थोड़ी और जानकारी दिखेगी, उसको आप देख लीजिएगा, सब ठीक है। उसके बाद आप आगे आएंगे तो ये इस प्रकार का आपको फाइटा ग्लोबल लिंकर का पेज दिखेगा। सो आफ्टर क्रिएटिंग द पासवर्ड यू विल प्रोसीड ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप, and here you'll open the FAIITA. We
page, and you'll see this. Sorry, let me just highlight this. So you'll see this up top on your screen. तो जैसे ही आप FAIITA ग्लोबल लिंकर खोलेंगे, आपको सबसे ऊपर ही ये दिखेगा क्रिएट योर फ्री ऑनलाइन स्टोर, और इसके ऊपर आपको गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है. सो द मोमेंट यू ओपन योर FAIITA ग्लोबल लिंकर अकाउंट, अप टॉप यू विल सी दिस, यू हैव टू क्लिक ऑन गेट स्टार्टेड एंड देन दिस स्क्रीन विल ओपन अप. सो आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप जैसे ही अपना FAIITA ग्लोबल लिंकर के, यानी यहाँ पर आपने पासवर्ड बनाया, उसके बाद जैसे ही आप एग्री एंड कंटिन्यू करेंगे तो आप यहाँ आ जाएंगे और यहाँ पर आपको ये दिखाई देगा. अब यहाँ पर आपको गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है, इस नीले बटन पे. सो वंस यू लैंड हियर, आई विल रीडू द प्रोसेस अगेन. सो यू विल गेट एन ईमेल विद द एक्टिवेशन लिंक. You will click on it and then you'll land on this page where every detail is pre-filled. All you have to do is to create your own password. Once you type in the password, you have to just click on agree and continue. In the next screen, you have to click on this button, which is get started, and then this screen will open up. Of the details will be pre-filled. अब अगले स्क्रीन पर भी सारी जानकारी पहले से ही भरी हुई होगी, परंतु सभी से आग्रह है कि एक बार इसे जरूर देख लें और इसमें अगर कोई परिवर्तन करना हो तो वो कर लें. सो ऑन दिस स्क्रीन मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन विल बी pre-filled. So but it is a request, everyone should review it. So the very first thing is the business name. So review it. If it is all okay, you continue it, otherwise you can make the changes. तो उसके बाद आपको अपना व्यापार का नाम यहाँ पर दिखाई देगा. अगर ये ठीक है तो आगे बढ़िए, अन्यथा इसमें परिवर्तन कर लीजिए. और जैसे आप यहाँ व्यापार का नाम डालेंगे, वहां पर आपको नीचे सिस्टम यहाँ पर ये URL दिखेगा, यानी जो भी इसमें, जैसे मैं स्टार कंप्यूटर का आपको उदाहरण दे रहा था, starcomputer.linker.store. So like the way after you enter your business name, so system will auto generate a desired URL. Now if you are okay with it, you can continue, otherwise you can make change to it. So for instance, I was explaining to you, or I was giving an example like starcomputer.linker.store. So like this, if you want, you can make the changes, otherwise you can continue with what the system had generated. So I'll just change that back so that we can delete this store at a later stage. तो इसको उसके बाद आपको अपना यहाँ पर contact details वगैरह देखनी है. So after doing that, you have to just check your contact details and address, everything is correct. तो एक बार ये देख लीजिए पता वगैरह सब ठीक है, और यहाँ स्टोर लोकेशन में देख लीजिएगा गूगल के ऊपर सही आ रहा है. सो प्लीज इंश्योर दैट इन दिस स्टोर लोकेशन सेक्शन योर गूगल लोकेशन इज कमिंग प्रिसाइसली, एंड देन एट द बॉटम यू विल सी योर नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड ईमेल आईडी. तो नीचे आपको यहाँ आपका नाम और ईमेल आईडी दिखेगा. उसके बाद आपको बस यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक करना है. सो आफ्टर रिव्यूइंग ऑल द डिटेल्स, यू हैव टू क्लिक ऑन कंटिन्यू एंड a next screen will open up. तब एक और नया स्क्रीन खुल जाएगा. In this screen, you'll see all the brands that are there. So if you don't deal in any particular brand, you have to just unclick it. So they are all pre-selected for your convenience, and you have to just deselect the brand that you don't deal in. तो यहाँ पर अगले स्क्रीन में आपको ये सारी ब्रांड्स दिखेंगी जिनके उत्पाद पहले से सिस्टम में हैं. अब इनमें से किसी भी ब्रांड के अगर आप उत्पाद नहीं रखते हैं, किसी ब्रांड में डील नहीं करते, तो ये आपको सिर्फ उसे डीसेलेक्ट करना है. आपकी सुविधा के लिए पहले से ही सारी सेलेक्टेड होती हैं. आपको सिर्फ जो नहीं करते उसको यहाँ पर टिक पर क्लिक करना है, उसका चयन नहीं करना है. अब ये प्रक्रिया कर ली जो कि बहुत सरल है. उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है. सो आफ्टर डूइंग दिस, आफ्टर डूइंग द डीसेलेक्शन पार्ट, आई एम जस्ट अज्यूमिंग दैट आई डोंट डील इन एंटीवायरस, सो आई एम जस्ट डीसेलेक्टिंग दैट. तो मैं उदाहरण के लिए एंटीवायरस को अभी नया उसका चयन नहीं कर रहा हूं. अब मैं नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा. सो आई विल मूव टू ए नेक्स्ट स्क्रीन. अब मैं एक नए स्क्रीन के ऊपर आ जाऊंगा. अब यहाँ पर अलग अलग कैटेगरीज मुझे दिखाई देंगी. ऑन द स्क्रीन आई विल सी द डिफरेंट कैटेगरीज व्हिच आर देयर. नाउ इफ आई डोंट डील इन फॉर इंस्टेंस सर्वेलेंस प्रोडक्ट, सो आई विल जस्ट डीसेलेक्ट दैट. तो अगर मैं सर्वेलेंस वाले उत्पाद जो है उनमें डील नहीं करता, इस स्टेप पे मुझे दिखेंगी अलग अलग कैटेगरी, यानी किस किस प्रकार के मैं उत्पाद रखता हूं. तो अगर मैं उदाहरण के तौर पर सर्वेलेंस वाले उत्पाद नहीं रखता तो मैं उनको हटा दूंगा.
So I'll just deselect that and then I'll click on next and I'll move to the next screen. तो उसके बाद मैं जैसे ही next पे क्लिक करूंगा, यहाँ पर ये बहुत थोड़ा लंबा सा स्क्रीन आपको दिखाई देगा, परंतु यहाँ पर अलग अलग आपको विकल्प दिखाई देंगे डिजाइन और कलर के. So on this screen, as I click on next, I'll open the screen. Now on this screen, you'll find it a little too long, but it has different design and color options. So as per your convenience, you can choose any of the design options. So let's choose this orange one. तो इसको हम जो है orange color वाला उसका चयन कर लेते हैं. So we have just selected this orange color and then I'll click on Flex Setup. So this is the end and now my store creation process will start. तो यहाँ पर मैंने सारी जो प्रक्रिया थी वो पूरी कर दी. अब मेरा जो स्टोर बनने का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा. मुझे फिनिश सेटअप पे क्लिक करना है. So I have to just click on finish setup. But for everyone's reference, I'll just quickly go back and show you the process again. So in the first step, which it was very clear, you have to just re-verify your information. जो पहला स्टेप था वो बहुत सरल था. वहां पर आपको सिर्फ अपनी जो जानकारी है उसको एक बार देखना है और उसमें अगर कुछ परिवर्तन करने की जरूरत हो तो वो करना है, अन्यथा आगे बढ़ना है. यहाँ पर जिस ब्रांड में आप डील नहीं करते उसे हटा देना है. So here all you have to do is to deselect the brand that you don't deal in, and in the next step you have to deselect which category you don't deal in. तो यहाँ पर आप आएंगे और जिस कैटेगरी में आप डील नहीं करते उसको हटा देंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे. So you'll just move on to here and then again as per your convenience, whichever color scheme or theme you are finding good, you can choose that and then you can move. But for everyone's reference, and I can just imagine this question coming up, can we change themes at a later stage and color scheme at a later stage? Of course, yes, you can do that. तो यहाँ पर मैं आभास कर सकता हूँ कि आप लोगों के मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि क्या हम एक बार ये दुकान बन जाएगी तो उसके बाद थीम में परिवर्तन कर सकते हैं कि कहीं ऐसा ना हो हम किसी एक थीम को का चयन कर ले परंतु जब दुकान बन जाए तो उसके बाद हमें वो बहुत अच्छी नहीं लगे. तो जी हाँ, आप थीम का और कलर का परिवर्तन कर सकते हैं, अपनी आवश्यकता के अनुसार कभी भी कर सकते हैं. तो वो करने के बाद आपको फिनिश सेटअप पे क्लिक करना है, जिस पे मैंने अभी क्लिक कर दिया है. So I have just clicked on finish setup and the store is getting created, which will take a few seconds or few minutes. So our store is getting created. In the meantime, I am thinking, let me show you. If you can, sir, just go through the chat section. There are some questions which have come in the mind of the viewers. Sure. I'll quickly answer that. But before doing that, I was thinking of sharing something. Our store creation is just completed. So let's complete this and then we'll go to the. एक बार ये हम पूरा कर लेते हैं. Yes, sir. In the meantime, anybody. और उसके बाद हम लोग जो प्रश्न उत्तर राउंड है उसके अंदर चलेंगे. तो यहाँ पर जैसे ही मेरा दुकान बन जाएगी तो ये कंग्रेचुलेशंस का मैसेज आ जाएगा. अब उसके नीचे आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको 2 दिन दिख रहे हैं और समय दिख रहा है. ये हम लोग हर दिन ट्रेनिंग क्लास करते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं और जो कि सभी के सहूलियत के लिए 2 भाषाओं में होती है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होती है. तो उसमें आप भाग ले सकते हैं. तो यहाँ पर आप चयन कर सकते हैं कि किस दिन आज क्लास में भाग लेना चाहेंगे या फिर कल की क्लास में भाग लेना चाहेंगे, तो उसका आप यहाँ पर चयन कर सकते हैं. So in the last screen you are seeing that your store is created and you are getting a congratulatory message for that, and underneath that if you look at, you are getting 2 time slots. One is for Saturday, that is today, and one is for Sunday, tomorrow. So now we do training classes for our members. So because creating store is just one part of the story and which is very much tech driven, so that is taken care of. But helping you actually use the store, that is the bigger part, and that's where we do daily training sessions. So every member
can just walk in. So there is no reservation kind of a thing. You have a link, you can just walk in and it is the same link. You can use that and you can participate in the training session, and it is done across 3 platforms. So it is done across Zoom, Google Meet and Facebook live stream. So as per your convenience, you can participate in any of the platform, and on Facebook live stream is also recorded. So in case you have missed a certain section of the training, you can obviously go back and review it again. तो अब यहाँ पर आपकी जब दुकान बनने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो आपको यहाँ पर ये बधाई का संदेश दिखेगा और उसके नीचे आपको ये दिन दिखेंगे जिनका आपको चयन करना है। अब यहाँ पर आप चयन कर सकते हैं किस दिन आप ट्रेनिंग की जो हम क्लास करते हैं उसके अंदर आप भाग ले सकते हैं, और ये ट्रेनिंग क्लास हर दिन होती है रविवार के अलावा, और इसमें 8:30 बजे रात में, ताकि सभी के लिए आसान। और उसके अलावा इसको हम दोनों भाषाओं में करते हैं, तो हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में की जाती है ताकि सभी सदस्यों को अच्छे से समझ में आए। और सभी की सहूलत के लिए ये 3 प्लेटफॉर्म पर भी होती है, तो ये जूम पर भी होती है, गूगल मीट पर भी होती है और फेसबुक पर भी लाइव स्ट्रीम किया जाता है। और उसका दूसरा उद्देश्य ये भी होता है कि अगर किसी सदस्य ने किसी कारणवश किसी क्लास को मिस कर दिया है तो वो पीछे जाकर यानी फेसबुक पर जाकर उस ट्रेनिंग प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग वहां पर होती है, तो उसको देखकर समझ सकते हैं कि किस प्रकार से हमें ये प्रक्रिया करनी है। तो ये आपको यहाँ पर चयन करना है और बस आपकी जो प्रक्रिया है वो पूरी हो गई। So this is the end of the store creation process. You have just scheduled when you would want to participate in the training session, and then you can move on to the dashboard. This is your online store's dashboard. Now to another question that I can assume coming up, so I'll answer those before I get into the Q&A session. तो 2 और प्रश्न जो कि आप लोगों के जहन में पहले से आ रहे होंगे, मुझे थोड़ा आभास हो रहा है, तो वो है कि एक तो कुरियर के बारे में, यानी हम डिलीवरी कैसे करेंगे, और दूसरा है पेमेंट के बारे में। तो उन दोनों के बारे में भी मैं पहले से ही बता देता हूं। तो पेमेंट के लिए आपको आपके ऑनलाइन दुकान से ही आप ऑनलाइन पेमेंट की भी सुविधा एक्टिवेट करा सकते हैं, यहीं पर आपको मिल जाएगा। तो जहां पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं और हमारी टीम आपकी सहायता करेगी इसकी एक्टिवेशन में। So the members first question, and a very common one, is that how to get the payment facility activated, digital payment activated. So you can from your online store seller panel, you can just go to this section, online store settings, payment, and you can apply for the payment activation from here, and our team will help you in getting it activated. So sometimes you get an instant activation within 15 minutes. You can start transacting, or maximum KYC day approval happens 2 to 3 days. Within that, you'll be able to start receiving payment in your account. And similarly is the courier facility. So it is also pre-integrated and it is totally automated. So you don't have to call up anyone or do a manual follow-up. तो दूसरा सवाल होता है कुरियर के लॉजिस्टिक के आसपास, तो उसमें ये भी पूरी तरह से स्वचालित आपकी दुकान से जुड़ी हुई है। आपको किसी को फोन नहीं करना, कोई मैनुअल वर्क नहीं करना, आपको इसे बस यहाँ से चालू करना है। इसके अंदर जैसे मैं बता रहा था कि आप शिपिंग जोन करके ये भी निर्धारित कर सकते हैं कि कहाँ का ग्राहक कैश ऑन डिलीवरी कर पाए और बाकी सब ऑनलाइन पे करवाएं, तो वो सब भी आप कर सकते हैं। या फिर आप लोकल कस्टमर को फ्री डिलीवरी बिल्कुल निःशुल्क डिलीवर करना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं। नाउ एज while going through the online store, while giving you a walkthrough of the online store, I mentioned that you also have a capability to restrict from where customers can avail cash on delivery and the rest of the customers will pay you online. So you can enable that from your platform as well, and you can also give free delivery to customers who are residing in vicinity, and for other customers they can pay a nominal fee or whatever shipping fee you would want to charge to them. You can pay, you can charge that from your customer. And another thing, and very useful thing that you might find it useful, and a lot of time what happens, businesses have a store and they have a warehouse and everything is not everywhere. So a lot of time when the order comes, you will not have that item in your store, it will be in your warehouse. Now ideally in the
conventional system, you would have to bring the item from your warehouse, keep it at your store, and when the courier person comes, hand it over to them. But in our system, we have given this flexibility. You can add your warehouse address and have the pickup done from the warehouse itself. You don't have to fetch the product to your store. तो यहाँ पर एक और बहुत अच्छी चीज जो आप उपयोग में ला सकते हैं, और बहुत सारे व्यापारियों और व्यापारों के साथ ये होता है कि आपकी दुकान होती है और आपका कुछ सामान आपके गोदाम में रखा हुआ होता है। ऐसा होता है कि आपका जब ऑर्डर आया तो वो सामान, वो वस्तु आपके दुकान में नहीं होती, आपके वेयरहाउस में होती है। तो अब आपको जब भी ऐसा आता है तो आपको, जो पुराना सिस्टम था उसके अंदर आपको सामान को लेके आना पड़ता था अपनी दुकान पर, फिर वो कुरियर वाला आके लेके जाता। परंतु यहाँ पर अगर आप कुरियर के माध्यम से भेज रहे हैं तो आप वेयरहाउस को जोड़ सकते हैं अपनी दुकान से और वहीं से सीधा पिकअप करा सकते हैं, तो आपको ये सामान इधर उधर नहीं करना पड़ेगा। तो वो सारी सुविधाएं इसके अंदर पहले से आती हैं। और जब भी ऑर्डर आएगा तो आपको एसएमएस भी आएगा, आपको ईमेल भी आएगी कि आपको ऑर्डर आ गया है, और आपको ये सारी जानकारी यहाँ पर डैशबोर्ड के ऊपर दिखाई देगी। जितने भी आपके ऑर्डर आएंगे, कितने पेंडिंग ऑर्डर है, यानी जिन्हें भेजना है, कितने भेज चुके हैं, आपके कितने पेंडिंग पेमेंट है, कैंसिलेशन है या रिटर्न के लिए किसी ग्राहक ने आग्रह करा है, तो वो भी आपको यहाँ पे दिखाई देगा। सो ऑन योर डैशबोर्ड यू विल हैव ऑल द एनालिटिक्स हियर। सी what is the total sale, how many pending orders, shipped orders, payment pending, cancelled orders, and if your customers have requested to return the product, that will be shown here. Now let me also show you, we have just gone through the process and created a store. Why not have a look at it? तो अभी हमने जो दुकान बनाई थी उसको भी एक नजर देख लेते हैं, जो अभी के सामने बनाई है। तो ये दुकान है जिसको अभी हम लोगों ने बनाया। तो इसमें देखते हैं क्या क्या इसके अंदर उत्पाद हैं। लैपटॉप्स को देखते हैं। So let's have a look at the store that we have just created. So this is the laptop category that I have just opened and it has all the products. तो ये लैपटॉप की कैटेगरी है जिसको मैंने अभी आपको खोल के दिखाया। इसके अंदर जितने भी उत्पाद हैं, यहाँ साइड में आपको फिल्टर्स वगैरह भी दिख रहे हैं। तो जैसे हम लोगों ने वहां करा था उस दुकान में 8 GB पे, तो मैं उसी प्रकार से यहाँ से भी फिल्टर कर सकता हूँ। So this is the store that we had just created, and like we did the RAM filtration in the other store, we can do that here as well. Logo is still not there, so you can upload your logo here, and that is also very simple to do. तो यहाँ पर अभी भी आपको लोगो नहीं दिख रहा होगा, जिसको आप अपलोड कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। सेलर पैनल के अंदर उसकी भी बहुत ही आसानी से सुविधा दी हुई है, जिसके माध्यम से आप यहाँ से जाकर एड्रेस में क्लिक करिए और यहाँ से लोगो अपलोड कर दीजिए। So it is very easy to upload logo. All you have to do is to go to the seller panel and then click on address, and from this section you'll be able to upload that. So this was all from my side about this walkthrough, and now I'll just look at the questions that members have shared. So I'll just turn off my screen share, and then I'll try to answer the questions. Yes, we have our Joint Secretary Anurag Saraf, who will help you in the same. Sure. I'm sure he has noted some questions. Anurag, are you there? Or if you can browse through the questions yourself, and because you'll be able to relate to them better. Yeah, let me try to do that. Anurag, are you there? Yes. Could we take the question? Yes. Can you take the questions? Yeah. People are asking regarding the addition of their own brands. Yeah. So absolutely, it is very much possible. May I request others to please mute? May I request others to please mute? Just 1 second, sir. Not a problem. We shall mute all, and yeah, I think we are done. Thank you. Yes, sir. Yes, Mr. Anurag. So if I've understood it clearly, the question was around adding their own products. So obviously, yes. What happens is of the popular brands that are out there. So we are helping out in that process, and even going forward, if the member wants to add their own product, they can easily do that.
तो जी हाँ, बिल्कुल। आप अपने उत्पाद अगर डालना चाहते हैं, आपकी दुकान है, तो आप इसमें जो भी डालना चाहते हैं आप डाल सकते हैं। बहुत ही सरल प्रोसेस है इसको डालने का। और इसके ऊपर हम लोग ट्रेनिंग क्लासेस भी करते हैं, हम सभी को सिखाते भी हैं कि किस प्रकार आप डाल पाएंगे। और अगर कहीं पर किसी को असुविधा होती है तो हमारी हेल्प डेस्क टीम है जो उनकी मदद करती है, और रोज ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है जिसके अंदर वो भाग ले सकते हैं और समझ सकते हैं कैसे वो अपने प्रोडक्ट अपनी इस ऑनलाइन दुकान के अंदर डाल पाएंगे। We have our past president Pradeep ji Diani. Sure. He has some certain questions. Pradeep ji, all yours. Pradeep ji, are you there? एक मिनट. I can read his question. Do this have a DIY option for assembling desktop? So no, this just have the products from popular brands. So was that the question, Pradeep ji? Yes, yes. So आप यही पूछ रहे थे ना कि क्या लोग वहां पर आकर अपने कंपोनेंट्स को जोड़कर अपने हिसाब से डेस्कटॉप बना सकते हैं? तो नहीं, इसके क्योंकि आईटी डीलर एसोसिएशन में बहुत आदमी ऐसे हैं ना जो अपना असेंबल का या उसका काम करते हैं जी, उनके लिए कैसे होगा फिर? जी, तो इसके अंदर अभी तो हम लोगों ने जो पॉपुलर ब्रांड्स के प्रोडक्ट हैं उनको रखा हुआ है। अब उसके अंदर अगर आगे आप चाहते हैं तो हमें बताइए किस तरह से उसके अंदर प्रोडक्ट्स ऐड करने हैं, हम लोग ऐड कर देंगे। प्रोडक्ट नहीं, वो तो एक असेंबल मशीन बनती है तो उसमें कंपोनेंट्स का ऑप्शन सब मिलता है। तो आई डोंट नो कैसे होगा, तो मे बी अपनी जो कोर टीम है उनसे बैठ के Probably Adnan, I think डिस्कस करिएगा हाउ कैन दे डू इट. Devesh bhai can answer this. Devesh bhai? Yeah, David bhai, is a wonderful suggestion and idea. And to be honest, we have not thought about it, and it should be incorporated, and we will try for it to do it. But anyhow, we have a component section where all the components like graphic card and everything and the pricing will be available. So choosing a product and making a product from the component can be done, but definitely that will not cover the assemble part of it. But where you can have a pre-configured product of your own brand or assembled product, that is possible. And in this option, we have to think over it, and it should be there in long run. So definitely we'll work on it and try to make it a different page for it. But in presently, you can choose the components and you can create your own pre-configured product of your own as a DIY product, and that you can list it. Actually, that's a good idea given by sir, because even the gaming machine, a lot of people would like to assemble their own machine. Adnan, I think this is a point we need to make a note. There's a lot of customers, a lot of aspiring students would like to assemble a machine by himself, by adding the components. So this is something which we need to explore as a team on how, the partners, mention all the, they get into a section where assemble your machine. And in that they should be able to populate what motherboard, everything. So we can have a discussion. This is a very good point which needs to be taken up by us. Sir, we will address this. We'll work on this. Okay, thank you. Thank you, sir. Anurag, you may proceed, please. Somebody was asking for in the payment option as a EMI option. Yes, so the payment partner that we have, RazourPay, they support EMI. So you will be able to offer EMI to your customers. Okay. And logistics and charges, there's any charges defined for the logistics and by the courier company? So yes, the system that works at the back end, it is a very transparent system. So whenever you are initiating a pickup or you are requesting for a pickup, it shows you what will be the charges for that order. So जब भी आप अपने बैकएंड के ऊपर आपके पास कोई ऑर्डर आया है, आप उसे भिजवाना चाहते हैं, तो जब भी आप रिक्वेस्ट डालेंगे तो आप कंफर्म करेंगे उससे पहले, वो आपको दिखाएगा कि इस ऑर्डर के लिए आपके इतने पैसे लगेंगे और उस अनुसार होता है। और ये प्रीपेड नहीं है। बहुत सारे सॉल्यूशंस प्रीपेड मॉडल पे चलते हैं जहां पर आप पहले से कुछ EWBs खरीदते हैं। ये पोस्ट पेड है, तो यहाँ पर आप जितने भी भेजेंगे ऑर्डर, उसका हर 15 दिन में आपके पास बिल आ जाएगा। So this is a prepaid order, unlike the other solutions which are there. And so for all the orders that you have shipped in 15 days, you'll get an invoice.
every 15 days. So it will happen 2 times fortnightly, and you'll be able to ship. And this system is extremely transparent. So whenever you are trying to raise a shipping request, before you confirm, it will show you what will be the charges for delivering this order. And once you confirm, only the pickup is initiated with the courier company. No, the person likes to know that is there any rate chart or something like that before, so that you can analyze before the order start generating. Mm-hmm. Yes, so we'll share the logistic charges with the members. Get it shared. Yeah, that will give a clarity to everybody. इसके अलावा I have a say. Hello. Yes. So far, everything is concerned. What I heard, that is no doubt is one of the topmost collaboration or organization or association which is representing India, right? Similarly, everything is okay. What I find sometimes when you go to say, May I know who's speaking, sir? Devraj Maharana from Tirupati Electronics, Midnapur district. Sir, you have a query? Yeah. Could you put it on the chat box, sir? Our coordinator, Anurag ji, will take it up. Unfortunately, my system is not working, and I am just attending this meeting through mobile, and I have no idea from the mobile to chat. Okay, or I can let it go later. Go ahead. Okay, sir. Okay, sir. Thank you. Okay. So, what I to say, ki everything is whatever the platform is made for direct customer or customer selling, right? लेकिन कभी कभी हम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशनल्स एंड अदर कॉर्पोरेट में भी डील जब करते हैं, so they need some kind of authorization and authentication, goodwill, etc., etc. So when you are going to deal with all reputed brands and manufacturers and #1 product of the globe, so this FAIITA should have some facility or some things to make convince to government, with whoever coming under this umbrella of this FAIITA, they should be treated as the authorized. And sir, can we take a specific question for this website, sir? Can we have your specific question, sir? What is your specific question? Specific question is, suppose if I bid to any government organization, they will ask me the particular proprietary authority from the proprietary company. If the proprietary company dealt by the FAIITA, so FAIITA, that means they are the itself is they should be treated as authorized, and the government should consider and corporate should consider. Okay, sir. Thank you, sir. We'll take it up, sir. President is here. He is listening to you, and this is with respect to the government committee license. He will take it up. Yeah, noted that point. Raj, you can please proceed. There's one more question. Like, what about the people asking? Like, what about the marketing of their e-store? How do they do that? How do they promote their store? So marketing, this is your own store. You'll have to market it yourself. And obviously, we have sessions every week wherein we bring in a marketing expert. So he'll share insights with you, how to market it online, how you can do it very easily on your own. So we'll try to help around that. But principally, आपकी दुकान है, आप ही को प्रचार करना है. अभी तक अपनी फिजिकल दुकान का भी कर रहे थे, अब ऑनलाइन का भी, और ये तो ज्यादा आसान है करना. Okay, to expand it a little more, FAIITA has enabled you to have a digital platform where, where you've been having a physical store. Today, the digital presence becomes extremely important for survival. So the digital presence is being brought at the lowest cost, which none of us can imagine. So that is the first aspect of it. So it is for you to promote. Once you have a website address for yourself, an e-store address for yourself, you can send it across to 500,000 customers of yours that you're available digital now with your website. That's the way you start promoting. And of course, Adnan has mentioned how we're going to have some tutorials on how to promote the thing for our members. Absolutely. So we can follow that. Yes. Yes, thank you, sir. I think so. Then no more valid questions out here. Anybody has more questions? So we take it forward from here. I think we can move ahead, and thank you very much. I think I now like to invite Anurag again to propose the vote of thanks. Bothraji, with your permission, if there's anything more to discuss. Yeah, please.
Yeah, could we conclude, Bosaji? Yes. There's no question left, no? Okay. Dear friends, I thank FAIITA and Anurag, your video is not on. video bandwidth issue is there. Just, Okay. just We would like to see you. Yes. got it. Yes. Just 1 second. Just 1 second. नवीन जी कुछ कहेंगे आप? नवीन जी म्यूट पे हैं. नवीन जी प्लीज अनम्यूट. हाँ सर, थैंक यू बोथरा जी एंड थैंक यू द एंटायर कंपास टीम. और इसमें ज्यादा कहना नहीं है, बस यही है कि कंपास टीम इसमें जल्दी से जल्दी जुड़े. और बोथरा जी से रिक्वेस्ट है कि सबको लिंक भेज दे जिससे कि सब लोग अपना रजिस्ट्रेशन करें और जो भी एक स्मॉल अमाउंट है उसका पेमेंट करके ई स्टोर को नेक्स्ट वीक में पूरे कंपास में हर मेंबर का ये चालू हो जाए, यही हम लोग की आशा है. एंड थैंक यू वेरी मच सर. थैंक यू. Thank you. Yeah, it was a nice session. I hope everybody liked it and would come forward with this initiative. Dear friends, I thank FAIITA and Compass team members for taking out time and attending this great live video organized by Compass in association with FAIITA. And also thank all the dealer resellers who make this event a great success by joining this great initiative. Thank you very much. Thank you. बोथरा, Yes. मैं समझा पाया सवाल? We'll talk. Okay. Thank you, sir. So we now end this meeting. Yes, sir. It's over then. Thank you. Compass team. Thank you, Kaushik ji. Meeting is over. We can have a informal discussion. Thank you so much. How did you find it? आप लोगों का अगर opinion आप दें. Thank you everyone. 2-5 मिनट. We can take your opinions on this. आरएन सेट का है प्रिस्क्रिप्शन जो भी दिया था लेटेस्ट, उसमें लिखा होता है एजिथ्रोल. आपके बारे में शायद लिखा है एजिथ्रोल. We have many senior members from our Compass here. Our Vice President Neeraj ji is here. Asiba is already here. Vice President Pradeep Yani is also here. Kaushik ji, when you ask something to share from the Compass side, I'll tell you one thing. The leadership quality we have seen in you and your team is amazing. You have changed the definition of IT. Information technology की जगह आपने कर दिया innovation and transformation of dealers. That is really lovely. That is part number one. And part number two, the best part what you have done is that unless you don't evolve कुछ नहीं होता है. You are involving each and every association तो evolve तो होगा ही होगा. Correct. So that is the best leadership quality you have shown, no doubt about it. And special thanks to Adnan. Jo the way he explained in Hindi and English in a simple and lucid language, it was so amazing, no doubt about it. Really great. Sir, thank you. Thank you so much for this kind words, नीरज जी. आज पहली दफा मैंने अदनान को पूरा सेशन सुना है. तो मुझे बीच में, the first session I had for 2 hours, where I understood the entire, the process, and then all the meetings kept on happening. Or because of my tight, इधर जाना उधर जाना, so I keep on coming and going to different meetings. So I could not have that pleasure of listening to, a full session presented to a specific association. So I could have that. लंबा इसलिए बोला कि मुझे अदनान, जितनी भी दफा मैं अदनान को सुनता, मुझे वो हमारा अमीन सयानी याद आ जाता था. जब भी वो हिंदी में बोलता रहता था. सर आज उसका 88th बर्थडे अमीन सयानी का. अरे क्या बात है. Sir, can we have some special remarks from our past president Pradeep ji? Yes, sure. Pleasure, sir. Pleasure. Yeah. अपन ने ये माने जो भी वर्किंग है बहुत अच्छी बनाई हुई है. इट्स वेरी गुड. बट मास ऑफ द पीपल अपने जो FAIITA के जो हैं या मेंबर्स में हैं, दे डील इन कंपोनेंट्स एट अ वेरी हाई लेवल. उसके लिए भी कुछ अपने को इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा. मे बी सम B2B मॉडल व्हिच नीड्स टू बी डेवलप साइड बाय साइड, ताकि वो एक मार्केट क्रिएट हो. क्योंकि ये जो फाइटिंग मार्केट है, इसमें तो एक आदमी
जरूर जाएगा, फ्लो आएगा, ट्रैफिक को बुलाना पड़ेगा तब आएगा फ्लो, एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा, मे बी फाइटा का कुछ जरूर कुछ एडवर्टीजमेंट का लाइनअप होगा कि कैसे उसके मेंबर्स के पास पब्लिक आएगी, क्योंकि इंडिविजुअल को तो मेंबरशिप को पुल करना बहुत मुश्किल है। सर वी कांट सी यू, प्रदीप जी, वी कांट सी यू सर। The nation wants to know how you look, sir. Yes, sir. हॉलिडे है ना, आराम कर रहे हैं सुबह से। तो मेरा यही था, मैंने सुबह मेरी बोथरा से डिस्कशन हुई थी, उसमें ये था कि शायद इसमें कुछ B2B मॉडल है, तो B2B और B2C में बहुत डिफरेंशिएट हो जाएगा। B2C यू आर टारगेटिंग अ वेरी क्राउडेड प्लेस जहाँ पे अपने को फाइट करना है, वहाँ पे प्राइस, डेली अपडेशंस कितना फास्ट आप कर सकते हो एक बहुत बड़ा मैटर करेगा जो बैकग्राउंड में काम करता रहेगा। और B2B या छोटे डीलर्स के लिए जो अपने जो मार्केट डेवलपमेंट या कुछ बात करना चाहते हैं वो एक अलग चीज है, वो एक ऑल टुगेदर डिफरेंट बॉल गेम है। आसिफ भाई आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? Sir, to whatever I could understand the Hindi, you know, I'm from down south, so let me just try to address it. If you know, that is why we took up this e-store, B2B, and B2C as three different verticals within our committee. So B2B, of course, we have a solution for all this. We would like to do it in such a way that you know the principle of FAIITA remains that we need to do justice to every tier member in the entire FAIITA umbrella. So we have tier 2, we have tier 3, you know, there are some places we might have even tier 4 members. We would like to do, you know, the principle is to safeguard the interest of every tier member. So we are carefully looking into it, though we have a solution, we're carefully looking into it that it should not become a huge advantage to somebody and a huge disadvantage to somebody. That's what we are looking at, and we are soon to launch all these solutions for our FAIITAs. I hope I addressed your question. Probably this that's to my understanding. Yeah. I just add on to it, प्रदीप भाई, ये जो हमारा प्लेटफॉर्म इज वेरी वेरी वर्सेटाइल। अगर इसके अंदर कोई जना स्टोर खोलता है जो कि डेडिकेटेड होगा कंपोनेंट के लिए, तो दैट इज वेरी मच फीजिबल। और उसमें कोई जरूरी नहीं है कि आप फिक्स प्राइसिंग दें रिटेल के हिसाब से, आप रिटेल के हिसाब से प्राइस दे सकते हैं, MRP दे सकते हैं, डिस्काउंट मेंशन कर सकते हैं, और जिसको आपसे B2B में होलसेल करना होगा उस प्रोडक्ट का, वो आपसे डायरेक्ट कनेक्ट कर सकता है ऑन कंपोनेंट, बिकॉज कंपोनेंट इज बेसिकली नॉट अ प्रोडक्ट जो कंज्यूमर को अट्रैक्ट करता है। पर आप इसके अंदर वर्सटैलिटी इतना है, और हम लोग जितना कैटेगरी क्रिएट कर रहे हैं इसके अंदर, सारा कंपोनेंट की कैटेगरी इसके अंदर अवेलेबल है। तो आप MRP पे लिस्टिंग करके B2B पीछे से नेगोशिएट कर सकते हैं, उसको भी डील कर सकते हैं। स्टॉपेल नहीं है कोई भी इसके अंदर। आप किसी